this is Babita and I welcome you all on Learn NEET IIT JEE with Babita। आज मैं आई हूँ आप सबके साथ फिजिक्स की चैप्टर 1 की न्यू वीडियो लेकर। द चैप्टर नेम इज़ फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें एक शॉर्ट में पूरा करवाने वाली हूँ। So friends, again I request you all to just like, share and subscribe the channel so that you can get the benefit of learning from another aspirant of NEET and IIT JEE। So without wasting time, let's start a physical world and end it in the same video as well। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 1, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन होगी साइंस। व्हाट इज साइंस? सो साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, साइंस डिराइव करा गया है लैटिन वर्ड scientia, and the meaning of this word scientia is to know everything around us, to know everything around us। means scientia का meaning तो है to know, and because in science we learn about our nature and our surroundings and our universe as a whole, तो everything around us I've added on my own। अब साइंस की कुछ branches भी हैं, because science is not a small thing, it is a big field, इसकी बहुत सारी branches हैं। Let me tell you those branches names। So first of all we have astrophysics। Secondly we have nanotechnology। Astrophysics refers to studies about space and all, and nanotechnology refers to जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत छोटा करके डिपिक्ट करना, that is nanotechnology। Then we have biotech, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। दैन वी हैव जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड ऑल। दैन वी हैव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स इट इज़ अ डीप स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैन वी हैव फोरेंसिक, जिसमें डेड बॉडीज़ पर काम किया जाता है। And at last we have nuclear physics। This is the last but not the least। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, बिकॉज साइंस इज़ अ वास्ट फील्ड, लेकिन उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिज़िक्स। सो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी एक्सेट्रा। दैन वी हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि साइंस में भी हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। So what is physics? Physics is derived from a Greek word, fuses। Physics is derived from a Greek word fuses, which means nature। तो बेसिकली फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। नेचर में क्या हो रहा है, किस नेचर की किस एक्टिविटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फिनोमिनन है, क्या कॉजेज हैं इस फिनोमिनन के, क्या इफ़ेक्ट्स हैं एंड ऑल। For example, we have thunderstorms, lightnings, thunderstorms, like we have lightning, and we have rainbow formation। इन सब की स्टडीज़ होती हैं फिजिक्स में, बाय द वे। दैट इज़ what physics is about। So friends, we are done with science की definition, we are done with physics की definition। अब हम जो पढ़ने वाले हैं that is scientific methods to study the physics।
क्या क्या मेथड हैं कि इन सिस्टमैटिक मैनर से फिज़िक्स को पढ़ा जाता है. सो साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी फिज़िक्स. एक एक करके उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. मीन्स ऑब्जर्व करो. जस्ट टू ऑब्जर्व वट एवर यू आर टू स्टडी अबाउट. उसे ध्यान से देखो, पहचानो, आइडेंटिफाई करो. वट एवर इज गोइंग ऑन कीनली जस्ट सी. डू नथिंग एल्स देन ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. जब तक आपको अच्छे से समझ ना आ जाए तब तक उसे ऑब्जर्व करते रहो. उसमें क्या हो रहा है समझने की कोशिश करते रहो. देन यू हैव कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट डजंट रेफर टू द एक्सपेरिमेंट जिस पर हमारा कंट्रोल हो, दैट वे. कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में किया जाता है या फिर एक कंट्रोल तरीके से किया जाता है. देन वी हैव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग. We have qualitative and quantitative reasoning. एक्सपेरिमेंट में अपनी एप्टीट्यूड स्किल्स, अपनी रीजनिंग स्किल्स को अच्छे से लगाओ. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एज वेल. देन वी हैव मैथमेटिकल मॉडलिंग. As we all know, maths play a very important role in physics, in science as a whole. So mathematical modeling is another important part of the scientific methods. After scientific experiments and reasonings, then we have to predict कि होने क्या वाला है, रियल में इसके पीछे फिनोमिनन क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है. And at last we have to verify and falsify. वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन. फॉल्सिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि उसे वेरीफाई करो और फिर उसे झूठा प्रूव करो. हम उसे वेरीफाई करेंगे. इफ़ इट प्रूव राइट देन ऑल वेल. इफ़ इट इज़ नॉट प्रूव्ड राइट मीन्स इफ़ इट इज़ प्रूव फॉल्स तो वो फॉल्सिफिकेशन हो जाता है. अब हम एक एक करके सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन, वेरिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. सो हियर वी हैव सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. Systematic observation refers to perform any experiment and observe the changes and details and details. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. लाइक वी हैव अ बॉल, वी थ्रो इट डाउनवर्ड्स. तो इसमें क्या सिस्टमैटिक, थ्रोइंग द बॉल डाउनवर्ड्स इज द एक्सपेरिमेंटेशन विद द बॉल. अब इसमें सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्या होगी. तो हमने जब थ्रो किया तो टाइम t था, जब नीचे आई तो टाइम था 2 सेकेंड. T1 was 0, T2 was 2 सेकेंड. ये इसके बीच के डिस्टेंस सपोज इट इज़ 3 मीटर्स. एंड इसकी वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी एंड ऑल. ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के पार्ट में आते हैं. सेकेंडली वी हैव कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट so it refers to comparison between two conditions. Like to comparing two conditions is called as controlled experiment. Comparison. Let's take another example.
this time from biology. Of course we are doing physics, but experiments के examples तो biology से ले ही सकते हैं. After all we are NEET aspirants. So we have a tree. ड्राइंग तो काफ़ी अच्छी नहीं है, बट भावनाओं को समझिए. We have a tree and it's getting sunlight, and we have a similar tree under similar conditions, but the only thing is that it is not getting any kind of sunlight in other things. और सब मिल रहा है इसे, बस सनलाइट नहीं मिल रही. So it's getting sunlight and it's getting no sunlight. कहीं आपको यहाँ पे सन नज़र आ रहा है? नहीं ना, अंदर रख रखा है बेचारे पेट को मारने के लिए लोगों ने. बट डोंट वरी, ये भी अपने जलवे दिखाएगा. अब जो सनलाइट वाला पेड़ है वो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा. अब जिसे सनलाइट नहीं मिल रही, द ट्री विल से व्हाई डू आई ग्रो व्हेन आई एम नॉट गेटिंग एनी सनलाइट. फिर भी उसे और सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसने सोचा यार थोड़ा सा तो ग्रो कर ही लेता हूँ. बेचारे और तो सारी चीज़ कर दे ही रहे हैं, सनलाइट ही तो नहीं दे रहे. सो दिस वे ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है. दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस यू पुट सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, यू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स and then compare the two conditions. That is called as control experiment. Then we have qualitative and quantitative reasoning. This is the third step of your processes, scientific methods. Quantitative reason. Mathematical modeling से पहले it is the first step that includes maths. Even before mathematical modeling. And it is also called as heart and soul of science, heart and growth of science. It is also known as heart and growth of science. The point is the most important. इसे learn कर लीजिए. Then we have mathematical modeling. Mathematical modeling. इसमें हम formulas and derivations and all. We have formulae etc. Formulae, derivations, etc. Then we have prediction. Like examples, few examples are weather forecasting. We have weather forecasting. और वी हैव सोलर एंड लूनर एक्लिप्स. इनको भी पहले ही प्रेडिक्ट किया जाता है ना. हमें कैसे पता चलता है उस दिन चंद्र ग्रहण है, उस दिन सूर्य ग्रहण है. ये सब हमारे साइंस के तो चल रहे हैं, और साइंस में भी प्रेडिक्शन का पार्ट है. देन एट लास्ट वी हैव वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन. वेरिफिकेशन एंड falsification. इसमें या तो एक्सपेरिमेंट प्रूव होता है या फिर एक्सपेरिमेंट फेल होता है. लाइक जो रूदरफोर्ड मॉडल था, रूदरफोर्ड मॉडल, इट वॉज फेल्ड बाय नील्स बोर. फेल्ड बाय नील्स. उसने पहले भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तब उसे ये थोड़ी पता था कि एक्सपेरिमेंट फॉल्स प्रूव हो सकता है. लेकिन फिर भी उसने वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया,
और एट लास्ट वो फॉल्स प्रूव हो गया, दैट इज ऑल। सो हमने साइंटिफिक मेथड्स में वेरिफिकेशन तक कर लिया था। तो वेरिफिकेशन के बाद दो ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट ऑफ दैम इज़ कि वो वेरिफिकेशन प्रूव ना हो पाए, मीन्स वो फेल हो जाए, और सेकेंड वो वेरिफिकेशन हमारी सक्सेसफुल हो जाए। इन ऑर्डर इफ द वेरिफिकेशन फेल्स तो कुछ हो नहीं सकता, दैट इज पुट इन द कैटेगरी ऑफ फॉल्स और फेल्ड experiment. Then we have one another case in which the verification proves right, and in that case we have several things to give as. So first of all is hypothesis. Hypothesis is none other than the supposition without assuming that it is true, based on observation and open for further investigation. For example, like we have in class 10th we had in a maths chapter, so we have to prove that the number is irrational. First we assume that the number is rational, then we prove that the number is not rational, it has some quality which is not there in the rational numbers, and then we prove that it is irrational. तो पहले हम उसे ट्रू अज्यूम नहीं करेंगे, पहले हम उस नंबर को रैशनल अज्यूम नहीं करेंगे, एंड देन जब वो फॉल्स प्रूव नहीं हो पाएगा देन इट इज ट्रू. दिस इज ऑल अबाउट साइंस. देन वी हैव एक्सियोम और पोस्टुलेट विच इज अ सेल्फ एविडेंट फैक्ट, जो अपने आप में ही पूरा हो, दैट इज एक्सियोम और पोस्टुलेट. It is any kind of statement or something which proves itself on its own. उसकी statement में ही उसका proof होता है. Then we have theory. Theory is a formal statement of rules on which a subject of study is based on any opinion. Means एक formal statement of rules on which a subject of study, on which a subject of study is based. मीन्स जब एक हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाती है, हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट अज्यूमिंग, लेकिन जब वो अजम्पशन प्रूव हो जाती है दैट इज come under the category of a theory. Then we have model. So we have model is the representation. जैसे हम स्कूल्स में मॉडल्स बनाते हैं, we have a big thing, we have a big phenomenon and we just modelize it into a small one. So it is a representation of any physical phenomenon. पहले उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये ऐसे हो सकता है, दैट वे ऑफ एनी फिजिकल फिनोमिनन. चूँकि मॉडल वर्ड आपके लिए नया नहीं है, लेकिन ये वो वाला मॉडल नहीं है जो एक्टर्स वो सब होते हैं, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ मॉडल. इन अ फिजिक्स वी हैव अ मॉडल एज अ रिप्रेजेंटेशन. सो इट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल फिनोमिनन विच इज़ डिफिकल्ट टू एनालाइज. Then we have law. लॉ का मतलब ही रूल या प्रिंसिपल होता है, तो लॉ इज अ जनरल रूल टू एक्सप्लेन फिजिकल फॉर्मूला इन वर्बल और मैथमेटिकल फॉर्म. एक स्टेटमेंट दी जाती है जो एक पूरे फिजिकल फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करती है. फिजिकल फिनोमिनन इन वर्बल और मैथमेटिकल फॉर्म. ये लॉ आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है.
These are all 5 categories which are represented in as when a statement is proved right, when it is verified. Then we have another topic, thrusts in physics. So there are 2 thrusts in physics, unification and reduction. So first of all we are having unification. यूनिफिकेशन जैसा कि नाम बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात को यूनिफाई करना या फिर अलग अलग बातों को एक करके बताना. सो एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन, क्योंकि ये फिजिक्स है तो इसमें सब कुछ फिजिकल फिनोमिनन के ही बारे में होगा. एक्सप्रेसिंग डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन in verbal or expressing diverse physical phenomenon in terms of new concepts or a single concept. मतलब अलग अलग concepts होंगे उनको एक करके बताना. That is all about unification. Then we have reductionism or reduction as we call it in short. We have reductionism. It is deriving the properties of complex system from its constituents and their properties. So deriving the properties of complex systems means एक बहुत बड़ा टुकड़ा है पत्थर का, उसको छोटी छोटी कंकड़ में बनाना. That is reductionism in our daily life examples. Or let's take a pinch of sand. उसमें कितनी तरह की मिट्टी होगी. वी हैव कोई अलग से कूड़ा करकट होगा या फिर कोई मेटल वगैरह होगा. दैट इज़ ऑल अबाउट दैट पिंच ऑफ सैंड. उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के उस सैंड के प्रॉपर्टीज़ को बताना, दैट इज़ रिडक्शनिज्म. देन यूनिफिकेशन में लाइक बहुत बड़ा घर बनाना है तो ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक वी यूनिफाई दैम एंड मेक अ बहुत बड़ा घर. दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिफिकेशन. As I told you recently that physics is all about nature and natural phenomenon. So here we are with fundamental forces of nature. So first of them is there are 4 fundamental forces of nature. First of them is the gravitational force or the gravity. So gravitational force is governed by F is equals to G m1 m2 upon r square. G represents gravitational constant. m1 is the mass of the first object जो gravity apply कर रहा है. m2 is the mass of second object जिस पर gravitational force apply हो रही है. Exactly तो m1 भी gravity apply करेगा और m2 भी gravity apply करेगा. But in this case we take m1 as the बड़ा object and m2 as the छोटा object. Then we have r square. R is the radius, r is the distance between the radii of the two objects जिनके बीच में force, gravitational force apply हो रही है. Then it is always attractive in nature. हमेशा attractive ही होती है. It is never repulsive. Always attractive in nature. Then it is a universal force. हर जगह अप्लाई होती है क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है. and every object in the universe has some mass. Then it has infinite range. मतलब यूनिवर्स के कोने में एक चीज़ रखी है, दूसरे कोने में दूसरी चीज़ रखी है, तो उन दोनों के बीच में भी हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती रहे. देन इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर.
हमेशा कंजर्वेटिव नेचर की होती है. Then it follows inverse square law. Inverse square law. ये f अगर प्रोपोर्शनली लगाएं तो f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आएगा. दिस वे इट फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ. देन इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स. दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ही अप्लाई होते हैं. देन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी मीडियम, चाहे वैक्यूम हो, चाहे पार्टिकल मीडियम हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डजेंट मैटर. हर जिसमें मास है ये मास डिपेंडेंट है. जिसमें मास है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी. और दुनिया की हवा भी ऐसी नहीं है जिसमें मास ना कम हो ज़्यादा हो, दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग थिंग. लेकिन मास हर चीज़ में होता है. देन इट इज़ मीडिएटेड बाय द पार्टिकल कॉल्ड एज ग्रेविटॉन. देखा, ग्रेविटी के नाम पे ही पार्टिकल का नाम ग्रेविटॉन. वाह. देन इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, लेकिन फिर भी वीकेस्ट फोर्स है नेचर. देन इट ऑपरेट्स अपॉन ऑल ऑब्जेक्ट्स. गर्म हो, ठंडा हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो भी हो, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स ऑपरेट करती है. देन सेकेंडली आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव electromagnetic force. As the name suggests, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, इन दोनों की कॉम्बिनेशन. हालांकि 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ही फोर्स है. देन इट इज़ गवर्न्ड बाय F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये कूलम्ब्स लॉ है. Again, Q is the charge on one object, Q2 is the charge on another object, and R square is again the distance between the two forces. Then we have, it is attractive and repulsive, दोनों, either attractive और repulsive, क्योंकि ये तो चार्ज डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट थोड़ी है. चार्ज डिपेंडेंट है. चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है. पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. दैट इज़ ऑल अबाउट चार्ज डिपेंडेंट फोर्स. देन इट हैज़ इनफाइनाइट रेंज. इसकी भी इनफाइनाइट रेंज होती है, जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स. देन इट इज़ ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, just like the gravitational force. Then it also follows inverse square law, just like the gravitational force. Inverse square law, क्योंकि इसमें भी देखो F is inversely proportional to R square है ना. Then ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव किस लिए होती है? बिकॉज इट इज़ charge dependent, so it is not mass dependent like gravitational force. It is charge dependent. Then it does not require any material medium, does not require any material medium. Next, it is mediated by photons. Mediated by photons. Gravity was mediated by gravitons, right? And this electromagnetic force is mediated by photons. Then, just like gravitational force, it is also central force. Center से center में लगती है. Then just like gravitational force, not like gravitational force, unlike gravitational force,
it operates only upon charged particles. क्योंकि न्यूट्रल का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव होगा तो रिपेल करा देगी, नेगेटिव होगा तो भी रिपेल करा देगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करा देगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन दिस इज द सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। So now we have strong nuclear force, which is the third force. It is generally attractive in nature. So this is generally attractive in nature, but not always. जब 0.8 फर्मी से लेस पार्टिकल हो जाते हैं, then it is repulsive. ये फैक्चुअल पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Then it is mediated by a particle called as pi meson. Gravity was mediated by graviton. Electromagnetic force was mediated by photon, and it is mediated by pi meson. So it is the strongest force, and it is non-conservative in nature. Conservative तो ये है ही नहीं। अब ये करती क्या है? It binds the protons, the neutrons in the nucleus. Binds the protons and neutrons. क्योंकि प्रोटॉन्स तो सारे पॉजिटिव चार्ज्ड हैं और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूट्रल, तो उनका तो फ़र्क ही क्या पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, प्लस उनके साथ जो न्यूट्रली हैविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनको बाइंड करती है न्यूक्लियस में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैन ये किस में ऑपरेट करती है? तो इट ऑपरेट्स अपॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Protons and neutrons are collectively called as the nucleons. Then it is independent of charge. Independent of charge. इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है? इन्हें तो बस प्रोटॉन्स पे ही वर्क करना होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. Then it is non-universal. ये तो है ही, हर एक ऑब्जेक्ट थोड़ी ना प्रोटॉन होता है. Then it doesn't affect the electron. इससे इलेक्ट्रॉन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये हो ना हो, डजेंट इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन. आफ्टर दैट वी हैव द वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में आज तक साइंटिस्ट बहुत कम पता लगा पाए. इट इज़ सेकेंड मोस्ट वीकेस्ट फोर्स. वीकेस्ट कौन सी है? ग्रेविटी. And second most weakest is the weak nuclear force. It has a range of 10 to the power minus 16 meters. It is mediated by boson. Mediating particle of weak nuclear force is boson. Then it is responsible for the decay of the nucleus. उल्टी चीज़ उल्टे काम. Responsible for the decay of the nucleus. बड़ी मुश्किल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस को, और ये दुष्ट प्राणी, या फिर दुष्ट प्राणी तो ये है नहीं, दुष्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स आके करे कराए की बिगाड़ देती है. न्यूक्लियस की करे कराए को बिगाड़ देती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मेहनत को बेकार कर देती है. इट ऑपरेट्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो.
न्यूट्रिनो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तरह एक पार्टिकल होता है जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे। देन इट एक्ट्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। which keeps them from disintegrating, which keeps them from disintegrating. So guys, now we have the scopes of physics or the domains of physics. So there are 3 domains in physics. First of all is microscopic domain. Microscopic domain. Then we have mesoscopic domain. And at last we have macroscopic domain. तो हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. So first of all we have macroscopic domain. So it includes the phenomenon of objects of finite size. Objects of finite size means which can be visible with our naked eyes, greater than 10 to the power minus 6 meter. That is all about microscopic domain. It is called by 2 other names. First of them is old physics or classical physics or Newtonian physics. Newtonian physics means the physics before the Newton strikes. Newtonian physics. Then it has 4 categories. Which are, first is mechanics. Second is optics. Third is thermodynamics. And the fourth one is electrostatics. इन 4 कैटेगरीज में से मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स हम +1 में पढ़ने वाले हैं, एंड ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम +2 में पढ़ने वाले हैं. सेकेंडली वी हैव माइक्रोस्कोपिक डोमेन. Microscopic domain. It includes the phenomenon of size of objects of size less than 10 to the power minus 14 meter, means not visible with our naked eyes. Not visible with our naked eyes. These are the objects whose study comes under the microscopic domain. Again, it is known by 2 other names. First of them is modern physics, advanced physics, or quantum physics. Then we have mesoscopic domain. ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच की स्टडी होती है. सो इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक डोमेन. Intermediate between
microscopic and macroscopic domains. Then it represents nanotechnology. नैनोटेक्नोलॉजी वो शब्द है जो आजकल परिचय का मोहताज नहीं रह गए. और few tens and hundreds of atoms is very important line from NEET point of atoms. Then this represents objects between 10 to the power minus 6 and 10 to the power minus 14 meters. Then it represents nanoparticles. As the word represents, it is nearly 10 to the power minus 9 meter. अब इसमें लेंथ है जो दैट इज 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 14 to 10 to the power 26 meters. Then we have mass. 10 to the power minus 31 to 10 to the power 55 kg. Then we have time. That is 10 to the power minus 22 to 10 to the power 18 seconds. So guys, now we have the scopes of physics or the domains of physics. So there are 3 domains in physics. First of all is microscopic domain. Then we have mesoscopic domain. And at last we have macroscopic domain. तो हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. So first of all we have macroscopic domain. So it includes the phenomenon of objects of finite size. Means which can be visible with our naked eyes greater than 10 to the power minus 6 meter. That is all about microscopic domain. It is called by 2 other names. First of them is old physics or classical physics or Newtonian physics. Newtonian physics means the physics before the Newton strikes. Newtonian physics. Then it has 4 categories. Which are, first is mechanics, second is optics, third is thermodynamics, and the fourth one is electrostatics. इन 4 कैटेगरीज में से मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स हम +1 में पढ़ने वाले हैं, एंड ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम +2 में पढ़ने वाले हैं. सेकेंडली वी हैव माइक्रोस्कोपिक डोमेन.
It includes the phenomenon of size of objects of size less than 10 to the power minus 14 meter, means not visible with our naked eyes. Not visible with our naked eyes. These are the objects whose study comes under the microscopic domain. Again, it is known by two other names. First of them is modern physics, advanced physics, or quantum physics. Then we have mesoscopic domain. ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच की स्टडी होती है. सो इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक डोमेन. इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक and macroscopic domains. Then it represents nanotechnology. नैनोटेक्नोलॉजी वो शब्द है जो आजकल परिचय का मोहताज नहीं रह गए. Or few tens and hundreds of atoms. Few tens and hundreds of atoms is very important line from NEET point of view of atoms. Then this represents objects between 10 to the power minus 6 and 10 to the power minus 14 meters. Then it represents nanoparticles. As the word represents, it is nearly 10 to the power minus 9 meter. अब इसमें लेंथ है जो that is 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 14 to 10 to the power 26 meters. Then we have mass. 10 to the power minus 31 to 10 to the power 55 kg. Then we have time. That is 10 to the power minus 22 to 10 to the power 18 seconds.